Hi, welcome to the day 4. So, you must have heard about the happy chemicals. So, I will tell you about the different type of happy chemicals which are generated in your body, and they are very much useful for your happy and energetic life. The four chemicals are dopamine, oxytocin, serotonin and endorphin. अब हम देखेंगे कि ये चार जो केमिकल्स जो बॉडी में रिलीज होते हैं ये किस तरह से रिलीज होते हैं, इनको रिलीज करने की कौन सी ऐसी एक्टिविटीज है जो आपको करना होता है. Yesterday we have learned about 3 secrets to reverse aging, and one of the secret was reducing the stress. So for anti-aging effect on your body, you need to cut down the stress and feel good and feel happy. Our aim is to generate these happy chemicals, happy hormones in your body. So these different chemicals are released in your body with different activities you are involved in. So we have given these kind of activities which can generate these happy hormones inside your body in our task. So make sure you are completing your task given in the daily schedule. Don't procrastinate, be consistent. Now understand what are these chemicals and how they are released. कौन सी एक्टिविटी को करने से कौन सा केमिकल रिलीज होता है. So number 1 is dopamine. ये एक तरह का रिवार्ड केमिकल है. इट्स अ रिवार्ड केमिकल जो रिलीज होता है बाय कंप्लीटिंग द टास्क. व्हेन यू कंप्लीट एनी टास्क तो आपको कंप्लीशन के बाद जो सेटिस्फेक्शन मिलता है उस समय ये केमिकल रिलीज होता है. अदर वन इज डूइंग सेल्फ केयर एक्टिविटीज लाइक अपनी बॉडी की केयर करना हो, ग्रूमिंग करना हो, या ऐसी कोई भी अपने पसंद की चीज करना हो जिसमें आपको मजा आता है. उन सारे केसेस में डोपामाइन केमिकल आपकी बॉडी में रिलीज होता है. ईटिंग गुड फूड, अपनी पसंद का खाना खाने से भी यही केमिकल रिलीज होता है. छोटी छोटी विंस जो आपकी होती है, सुबह से शाम तक आप जो भी काम करते हैं कि आपने कोई टारगेट सेट किया, यू हैव सेट एनी माइलस्टोन फॉर द योर टास्क वॉट एवर यू आर डूइंग. सो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दैट टास्क व्हेन यू हैव स्मॉल विंस, सो व्हेन यू आर सेलिब्रेटिंग दिस थिंग then also dopamine is released. Other happy chemical is oxytocin. It is called love hormone. Whenever you have the feeling of love with anything, with anybody, any object, with any human, with any pet, so oxytocin is released. Like playing with a dog, playing with a baby, holding hand of other person, hugging your any of the friend or family member or anybody, and giving compliment to others. So ये सारी एक्टिविटीज हैं जिसके थ्रू जो केमिकल रिलीज होता है which is called love hormone, that is oxytocin. Other hormone is serotonin. It is a mood stabilizer. Serotonin is released by doing meditation, when you are running, when you have the exposure to the sun, you are walking in the nature, you are enjoying the nature, you are doing swimming, cycling. So serotonin, which is a mood stabilizer, whenever you feel anything which enhances your mood, जिसमें आपको मजा आने लगता है, तब serotonin रिलीज होता है. It is a very essential hormone, and actually these hormones are already being released in your body, but you are not identifying it. So in our complete task of our challenge of anti-aging, we are deliberately doing these kind of tasks जिसमें ये हार्मोन रिलीज हो. So we are pushing this hormone to get released inside your body, makes you feel happy and satisfied. Now the another hormone which is being released from the body, that is endorphin. Endorphin is a pain killer. So जब भी आप हंसते हैं, when you are doing any of the laughter exercise, whenever you are using any essential oil inside your body, whenever you are watching comedy or doing comedy, involved in any funny thing, you are having dark chocolate, you are exercising also. So endorphin is a chemical which is when released from your body, it makes you happy and you feel very comfortable in this kind of atmosphere. Now I think कि ये सारी चीज़ें जानने के बाद आप दिन भर में जो भी एक्टिविटीज़ करते हैं, तो जिस भी एक्टिविटीज में आपको अच्छा फील होता है, तो यू ट्राई टू रिलेट इट विद द हार्मोन एंड ऑल्सो ट्राई टू डू द डिफरेंट एक्टिविटीज इवन विच आर नॉट इन्वॉल्व इन द टास्क, जिससे आपको अच्छा फील हो. मेक श्योर इट इज नॉट एडिक्शन.